नमस्कार गाइस, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज अपने इस सुबह का सेशन अभी सुबह के 9 बज गए। अभी सुबह के 9 बज के 7 मिनट हुए। ओके, ये मेरा भी सुबह का फर्स्ट डे सेशन है। मैं भी कितने दिनों बाद अभी सुबह का सेशन ट्राई कर रहा हूँ। अभी लास्ट वर्कआउट हमने डेविड गॉगल सर का वर्कआउट किया था। 10 किलोमीटर्स रन की थी और रात को उसका सेशन किया था। उसके वो किया था 6 तारीख को। उसके बाद 7 तारीख को मैं थोड़ा बाहर गया था और 8 तारीख थी कल। तो 8 तारीख को कुछ नहीं किया था मैंने कल। एक सिर्फ क्योंकि घर में बहुत जन थे कल, एक नाइट सेशन किया था मैंने कल अपने आप से, लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाया था 8 तारीख को, जिसमें ये नॉर्मल पुशअप स्क्वाट स्पीड्स किए थे। उसका वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब खिचमिट थी, ये थी, जगह नहीं थी मेरे को, इसलिए मैंने वीडियो बनाया नहीं। खुद का ये ऐसे नॉर्मली वर्कआउट किया और आज ये सुबह के सेशन में आया हूँ। ट्राई कर रहा हूँ मैं भी खुद सुबह न्यू में भी कितने दिनों बाद उठ रहा हूँ सुबह। तो 11 बजे उठा था। आज भी मैंने सुबह का 7:30 का अलार्म लगाया था, लेकिन उठते मुझे हो गए 8:30 वगैरह हो गए। और फिर मतलब उठ तो गया था लेकिन फिर से सो गया, पता नहीं 10 मिनट में, मुझे याद है 10 मिनट के लिए बैठा था फिर सो गया। और फिर 8:30 बजे उठा, ब्रश करके अभी मैं आया हूँ। तो ये बेसिकली वर्कआउट नॉर्मल वर्कआउट है सुबह का। क्या करना है, सिर्फ पुशअप्स करने हैं। ये भी मैंने इंटरनेट पे देखा था बहुत दिनों पहले, मीन्स फॉर एग्जांपल 3-4 महीने पहले ये मैंने भी किया था ट्राई। इनके सिर्फ 4-5 बार किया रहूँगा मैं भी ये वर्कआउट सुबह का, जिसमें बस पुशअप्स करने के और रनिंग को जाना है बाद में। तो पुशअप्स कैसे थे अपने, फर्स्ट है 30 पुशअप्स, फिर 28 पुशअप, 29 पुशअप्स, फिर 28, 27, 26 ऐसे पुशअप्स करते जाने के टिल 20 तक ऐसे पुशअप्स करते जाने के, और बाद में जाने का रनिंग के लिए एटलीस्ट 90 मिनट्स। तो ऑब्वियसली रनिंग के लिए अभी मेरे यहाँ पे ग्राउंड नज़दीक है नहीं, तो मैं ट्राई करूँगा कि अपनी बिल्डिंग के नीचे आके स्प्रिंट वगैरह मारूँ, लिटिल बिट स्प्रिंट वगैरह करूँ। तो ऑब्वियसली भी, और ये मैंने मेरा मास्क नहीं मिल रहा, इसे ही रुमाल बांध दिया मैंने। ओके, अभी हम लेट्स ट्राई करते वर्कआउट। ओके, मैं भी कितने दिन बाद कर रहा हूँ, ये आपके लिए फर्स्ट टाइम हो सकता है, तो ऑब्वियसली ट्राई करते। चलो कैमरा प्रेस करता हूँ, पुशअप्स करने। फर्स्ट 30 पुशअप्स, फिर 29 पुशअप्स, फिर 28 पुशअप्स, ऐसे करते जाने, ब्रेक लेंगे बीच में हम। ओके, वामोस। Wait guys, wait video to cross में फर्स्ट 30 पुशअप्स ट्राई करते हैं। Life is always giving you a test, trying to give you a way out, trying to give you an excuse not to show up. This is my excuse today. But guess what? You gotta have the mentality to show up every fucking day of your life, no matter what life throws at you. It's our responsibility to show up to the Coliseum of life, prepared for fucking battle. I don't care what you're going through, what life's throwing at you. It's your responsibility to find your new 100%. I'm a big believer in doing something that sucks. फर्स्ट 30 पुशअप्स डन। अभी करने 29 पुशअप्स ब्रेक लेने के बाद। Every single day of your life. Every day you're trying to find more of what you're capable of. And that's the big question. What are you capable of? Stop doing the things that you do every day. Do the shit that no one else wants to do. Do the shit that no one else is even thinking about doing. You don't find inspiration by not living in the grip of life. You need to live in the grip of life to find inspiration. Put challenges in front of yourself. When you put a challenge in front of yourself and you attack it, that's when you find inspiration. I wish the water was cold. I wish them motherfucking instructors keep on fucking running. I wish for fucking rain. When the ending is unknown and the distance is unknown, that's when you know who the fuck you are. If it was raining outside at 3 o'clock in the fucking morning, if it was snowing, the first instinct is don't go out there and do shit. My instinct was, we gotta fucking go out there.
Anything that was fucking horrible in my life that I would normally say no, I had to go through it. My new norm is you get up every fucking morning at 4 o'clock and you suffer. This is your new norm. That became my new fucking life. Most people want to get out of it. I said, no, motherfucker, this is your new life. This is who you are. Your new norm is you wake up and you suffer. And I started realizing if that's my mentality, this shit ain't hard anymore. Your fucking new norm is you wake. To make. Do you want to sit down and go back to that guy you once were? No. So this is what it takes. It takes that misunderstanding of people, and they'll never get it because they were never David Goggins. So that is what it takes for me to do what I do. It may take you something differently. So for me, everything has to be in the study. Everything has to be into this. Everything has to be in everywhere I am. It has to be there. Me, focused where I am. We're not proud of ourselves for the small accomplishments. What we need is we need this monstrosity of a thing to happen and say, I did it. Nah. There's a process that you have to go through, and patience is the process. And if we don't have patience, after a week, I haven't lost 30 pounds, man, I'm done. I'm over it. So that's what I found out with people, man. They're not patient enough to realize and to enjoy. Guys, 29 push-ups done. अभी करने 28. The moment, not live in it, just enjoy it. There's no finish line in life, but enjoy that moment. Roger that, man. I lost 5. Let me go 10 next week. There's no fucking passion. There's no fucking motivation. There's no, oh my God, man, no. It's every day of your life just doing. This is gonna fucking suck. Where's passion when you're 300 pounds? Where's the motivation when you can't read and write? Where is it? So how did this happen? I just... What? Guys, 28 push-ups done. अभी करने 27, जो कि एकदम से 4th set. Everything was done to try to learn how to become a better basketball player. Everything. And so when you have that point of view, then literally the world becomes your library to help you to become better at your craft. So because you know what you want, the world's giving you exactly the information you need to become better at it. Because you know what you're looking for. So many guys tell stories about your work ethic. Yeah. What was really your work ethic like, and for how long did you stay disciplined? Well, I mean,
every day. I mean, since 20 years. I mean, it was an everyday process and trying to figure out strengths and weaknesses. For example, jumping ability. Man, my vertical was a 40, it wasn't a 46 or a 45. My hands are big, but they're not massive, right? So you got to figure out ways to strengthen them so your hands are strong enough to be able to palm a ball and do the things that you need to do. Quickness, I was quick, but not insanely quick. I was fast, but not ridiculously fast, right? So I had to rely on skill a lot more. I had to rely on angles a lot more. I had to study the game a lot more. And, but I enjoyed it though. So like from the time I can remember when I started watching the game, I studied the game and it just never changed. It's a good separation for me, emotionally, to be able to put myself in a place where at practice or when I'm training or during games, I switch my mind to something else. I switch my mode into something else, right? For me, it's the equivalent of Maximus Decimus Meridius in Gladiator picking up the dirt, smelling the dirt. It's go time, right? So that was my mental switch. It was like an actor getting ready for a film. You gotta put yourself in that cage. When you're in that cage, you are that character. And then when you leave there, it's something completely different. But when I'm in that cage, bro, don't touch me, don't talk to me. Just leave me alone. How did you get mentally and emotionally so strong where it doesn't bother you? Well, you got to look at the reality of the situation. Like for me, it's not, you kind of got to get over yourself. Like, it's not about you, man. Like, okay, you feel embarrassed. You're not that important. Like, get over yourself. That's where you go. Get over yourself, right? Like you're worried about how people may perceive. Guys, 27 push-ups done. 27 डन, अभी करने 26 और ब्रेक मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ. ट्राई करो 30 सेकेंड लूँ. कभी कभार ज़्यादा भी हो जाता है. आपके हिसाब से आप ले लो. बिगिनर हो बहुत ब्रेक लो, मीन्स एक टाइप से ब्रेक लो ताकि हैंड्स वगैरह फ्रेश हो जाएगा एक टाइप से. फिर करो, एकदम मोटिवेट होके करते मत जाओ. ओके, vamos. ब्रेक वर्क ये वहाँ पर है. Deceive you and like you're walking around and it's embarrassing because you shot 5 air balls. Get over yourself, right? And then after that, it's okay, well, why did those air balls happen? Got it. High school, year before, we played 35 games, max, right? Week in between, spaced out, plenty of time to rest. In the NBA, it's back to back to back to back to back to back to back. I didn't have the legs. So you look at the shot, every shot was online, but every shot was short, right? I gotta get stronger. I gotta train differently. The weight training program that I'm doing, I gotta tailor it for an 82 game season so that when the playoffs come around, my legs are stronger and that ball gets there. So I look at it with rationale and say, okay, well, the reason why I shot air balls is because my legs aren't there. I go, well, next year they'll be there. That was it. Done. Were there some names that you looked at and says, these 3 guys are as crazy as I am? At the time, I deal with what I've referred to as Goat Mountain. I went to Goat Mountain and I talked to Magic, Michael, Bird, Hakeem Olajuwon, Jerry West, Oscar Robinson, Bill Russell. So I would talk to them. What did you do? What were your experiences? Michael in particular, he's become my big brother. He's been my big brother since I first came in the league. And what was that process like? So I went to them and started understanding the ins and outs of the game and how they approach things and their level of detail and obsessiveness, and that's what I did. The players that had that passion but weren't willing to commit their entire lives to doing that, right? It's a choice, right? You have other things, you have family, you have all these other things that you have to do. The game can't really be your number one priority. And so I was just looking at that like, man, this is gonna be fun. If I'm buddies with you from high school, if I'm a cousin of yours, what happened to our relationship? How did that gravitate when you went into the league and you're determined to become
the greatest, or you're determined to become one of the greatest, what happens to our relationship? Oh, it suffers. It does suffer. Oh, yeah. Okay. Yeah, because And you understood that. You were okay yeah. with that. Oh, yeah. And the people that love you, like friends and family, like they know that about you. Got it. So they let you be you. And when you reconvene, you know, you pick back up where you left off. Mm-hmm. But make no mistake about it, everything in between is lost. Is 26 done? अभी 25 करेंगे. I think 6th set रहेगा. If you can see it here and you have the courage enough to speak it, it will happen. So a lot of times people believe in certain things but they keep to themselves. They don't put it out there. If you truly believe in it, if you become vocal with it, you are creating that law of attraction and it will become reality. Make this note. Don't become a victim of yourself. Forget the thief in the alley that's after your purse. What about the thief in your mind that's after your promise? There's this thing about people and they talk about manifesting. It's fucking real, man. Manifesting is real. When you figure out who you are and what you want to do, and you devote your life to it like a maniac, like you're all in on this thing, and you manifest, most of these people end up, you know, doing what they say they're going to do and being who they say they're going to become. It's real. And there's no excuses. There's no fucking days off. There's no, everybody's against me and this didn't happen for me because of this and that and all this whining. There's these people who dive in and they're hardcore and they're focused and they know what they want, they know who they are, and they lay out these short-term goals and this roadmap on how to get there. Most of those people make it. He's the biggest man I've ever seen. I wouldn't want to fight him. That's why no one will remember your name. There's people like us, we're crazy in the sense that we believe to be, it's almost delusional sometimes. Yes. You have, like, what's the one, I've heard this quote on the JRE before, it's like greatness and madness are next door neighbors and they just borrow each other's sugar once in a while. Bro, I can manifest like a motherfucker. Everything comes from the imagination. Everything comes from the imagination. So the power of the mind, people don't understand. We still don't understand. I still don't understand how powerful it is. I'm still learning. But I know one thing is I can make things happen. I can go into levels. I just can't tell the world, but like there's levels that like I've manifested things that I'm just like, I still shock myself, like how the fuck did I make that happen? And this is not even to do with fighting, this is to do with my personal life. And I'm like, I made that happen. And this is through this like manifesting subconsciously as well. Just years of something just manifesting, and boom, it's right there. I'm just like, shit, I really made that happen. It's scary, man. True years in the gym, true wins, true losses, true life. I just realized that if you say it to yourself and you look yourself in the eye and look yourself in the mirror and truly believe that not a man alive can beat you, then that is the way it is. And just true hours in the gym and preparation, I feel that I am untouchable right now. I want to reassure you that no matter what the night, no matter what the storm, no matter what the difficulty, there isn't anybody here that can't figure it out, find some things to do, step at a time, yes. Minute at a time, yes. Day at a time, yes. Week at a time, yes. But there isn't anything you can't walk away from. There isn't any challenge you can't overcome. I want you to have that kind of belief in yourself. Maybe it was your time to lose. You didn't think so. Lose! I don't lose! I win! It's 25 done. अभी करने 24 push-ups. I win! That's my job! That's what I do! If a person would sit down and let their body relax, totally relax, okay, and then start to visualize in their mind, see themselves the way they want to see themselves. See how you'd like to live your life. See yourself living it that way. Now understand that that's a picture in your mind. Take that picture and describe it. Write it out in the present tense. I am so happy now that I see myself, and write it out. Start to read it and read it and read it and read it every day. Carry it around and keep reading it. The
one point that all the great teachers, all down through history, have all agreed on. They've been in complete unanimous agreement on it. We become what we think about. Now, it may be fantasy at first. It might even appear to us as being a lie. But if you read it often enough, you'll start to believe it. I watch people in the personality change right in front of my eyes, and all they're doing is starting to see themselves different. They're starting to think different thoughts. Nah, I feel confident because I'm the best player in the world. It's simple. You can have anything you want if you want it badly enough. You can be anything you want to be. Do anything you set out to accomplish if you hold to that desire with singleness of purpose. If you want revenge for the bad things that have happened in your life, start with the version of you that hasn't lived up to your potential. Connor, in February of 2013, we spoke for the first time. You didn't have a car, you didn't have a pot to piss in, all you had were blueberries. Now here you are with the undisputed gold. Enjoy it, my friend. You deserve it, you called it. Yeah, from nothing to something to everything. You know, two years ago, and I had the goal in my head that I'm going to be the best player in the league. I believe in the law of attraction. It's something that is like an internal belief. So I just feel it in my whole being that I'm the best fighter on the planet. I honestly have convinced myself that I'm not designed to lose. Power of the mind, and I believe that that you can speak things into existence. And I believe that when you know where you're going and you know what you want, the universe has a way of stepping aside for you. हो गया, एक और ट्राई करता हूँ। 24 पुशअप्स डर, अभी 23 करने हैं। On a les pieds sur terre, les yeux pleins d'étoiles comme le toit de la Rolls-Royce. D'où l'on part, on peut pas tomber plus bas. La vie est une lutte, on fuit pas le combat. Yeah. On a l'habitude, on a la verrue, on vient de la rue, c'est pas une excuse, au moins pour nos proches, ceux qui ont cru, ceux qui savent qu'on baissera pas le fut. On prend de l'ampleur, on prend de l'élan, on a des épreuves, mais Dieu est grand, sur le terre-terre, en roue arrière, on refait le monde pour combler le manque. On veut pas la guerre, mais on va pas se taire, on fait les choses, on les emmerde. À qui la faute? Ils sont sur nos côtes, on est sur la côte, en zone AR, dans le futur, toi tu longes les murs, entre vaillants, on se reconnaît, fille de ma mère, on sort du vestiaire, on est des terres, comme Cabenoué. Ils veulent mon mot, parce que je suis dangereux. Couille à l'envers, moi je rends l'air, tu m'aimes pas tant mieux. J'prends mon propre record, financiers sont les enjeux. J'ai peut-être des torts, une aventador et sûrement des rageux. Mais qu'est-ce que je suis dans le jeu? Mais qu'est-ce que je suis dans le jeu? Mais qu'est-ce que je suis dans le jeu? Dangereux, mais qu'est-ce que je suis dans le jeu? Hey, on le fait pour l'honneur, faut que les rumeurs, ils ne comprennent pas le langage du cœur. On grandit ensemble, on s'est vu ensemble, on revient de loin à 3000 à l'heure. Je tombe les rapports, je tombe les rappeurs, je fais pas de boxe, fais pas d'erreur. Et on rapplique, automatique, moi et ma clique, on n'est pas dans les pics. On a charbonné, on a rien volé, on n'est pas désolé, on les reprend de voler. Parfois tu gagnes, parfois tu perds, parfois c'est calme, parfois c'est agité. Fille de ma mère, on sort du vestiaire, on est des terres comme Cabenoué. Ils veulent mon mot, parce que je suis dangereux. Couille à l'envers, moi je rends l'air, tu m'aimes pas tant mieux. J'prends mon propre record, financiers sont les enjeux. J'ai peut-être des torts, une aventador et sûrement des rageux. Mais qu'est-ce que je suis dans le jeu? Mais qu'est-ce que je suis dans le jeu? Mais qu'est-ce que je suis dans le jeu? Dangereux, mais qu'est-ce que je suis dans le jeu? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je suis né pour tout péter, j'en ai rien à foutre. En bas de mon tour, on attend notre tour. Tu t'inventes des vies, si tu crois me stopper. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je suis né pour tout péter, j'en ai rien à foutre. En bas de nos tours, on attend notre tour. Tu t'inventes des vies, ils veulent mon mot, parce que je suis dangereux. Couille à l'envers, moi je rends l'air, tu m'aimes pas tant mieux. J'prends mon propre record,
financiers sont les enjeux. J'ai peut-être des torts, une Aventador et sûrement des rageux. Mais qu'est-ce que je suis dangereux. 23 done. We currently 22 push-ups. जो कि I think 8 rep रहेगा, 8 rep. Mais qu'est-ce que je suis dans le jeu. Mais qu'est-ce que je suis dans le jeu. Dangereux, mais qu'est-ce que je suis dans le jeu. Yeah. प्रोग्रेस भी होती है. ये भी ट्राई कर रहा हूँ यार. ये जो हम अब कर रहे हैं ये ट्राई करूँगा कि यार डेली करें. डेली एक टाइप से भी मुझे सुबह उठने की आदत लगानी है तो ट्राई करेंगे कि डेली करेंगे ये वाला. अगर आपको टाइम मिल सके तो आप भी करो गाइस. वामोस. स्किनी लोग के लिए एक टाइप से थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा पुशअप्स वगैरह सीख लिए तो. लेकिन अगर आप बल्क हो तो भी आपके लिए भी आसान है. बट एक टाइप से थोड़ा वेट रहेगा तो पुशअप्स एक टाइप से हार्ड हो जाएंगे मेरे हिसाब से. मुझे ऐसा लग रहा है वेट रहेगा तो. लेकिन यार फिर तो आपके लिए सबसे बड़ा टास्क है यार. टास्क है ओके कर दिखाओ. खुद को कर दिखाओ या फिर आप भी एक वीडियोस बनाओ फ्रॉम फैट टू ट्रांसफॉर्मेशन दिस टाइप से जिसमें आप ये सब वर्कआउट किया करो सुबह वगैरह. नमस्कार. अभी करने 22 पुशअप्स. लास्ट में यार थोड़ा दम भी लगाना पड़ता है. मेरा एक्सपीरियंस एक टाइप से आपको शेयर कर रहा हूँ पर्सनली. आप भी कर सकते हो. मुझे थोड़ा बहुत ईजी लग रहा है लेकिन एक टाइप से इसमें अपने को सिर्फ धीरे धीरे ट्राई करेंगे कि 30 मिनट का ब्रेक ले. अभी मैं तो पागल जैसा रुक रहा हूँ कितने भी सेकंड्स वगैरह. तो ट्राई करेंगे कि सिर्फ 30 सेकंड्स का ब्रेक लेंगे. धीरे धीरे करेंगे. अभी तो मैं भी बिगिनर ही हूँ. ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ. ये ऑब्वियसली मैं क्या करता था ये. लेकिन एटलीस्ट मैं बोलूँ मैक्सिमम 5 टाइम क्या रहेगा. सिर्फ 5 टाइम क्या रहूँगा मैं. ये 5 टाइम करता था और बिल्डिंग के नीचे स्प्रिंट करने जाता था जो कि 30 मिनट्स करता था स्प्रिंट. फिर कॉलेज के लिए निकल जाता था. वामोस. मेरे फर्स्ट ईयर के कॉलेज की बात कर रहा हूँ. फर्स्ट ईयर के कॉलेज में था तभी करता था ये वाला. लेकिन था मतलब थोड़े ही किया था मैंने. एटलीस्ट 5 बार ही किया रहूँगा बस. 22 पुशअप्स. तो ऑब्वियसली मैं भी कितने दिन बाद कर रहा हूँ ट्राई कर रहा हूँ पुश कर रहा हूँ. तो ऐसा आप भी कर सकते हो. बस यही बताना चाह रहा हूँ. एक टाइप से एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ. मीन्स और इसलिए से मेरी आपसे इससे बात करके मेरी कम्युनिकेशन स्किल ट्राई करूँगा इम्प्रूव हो जाएगी धीरे धीरे. एकदम शॉर्टली नहीं बात कर रहा हूँ मैं. बिग सेंटेंस यूज़ कर रहा हूँ. मीन्स घुमा के इससे गोल बात कर रहा हूँ. आई स्वेयर क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है. सेंटेंस फ्रेम करने नहीं आ रहा है बात करते टाइम आपसे ऐसे. कोई बात नहीं. वापस धीरे धीरे हो जाएगी. अभी 22 पुशअप्स. The world has been broke down.
22 पुशअप्स हो गए, अभी करने 21। और ऑब्वियसली यार मैं तो फ्रेम वगैरह में भी नहीं आ रहा हूँ कि होम वर्कआउट कर रहे हैं यार, घर में इतनी स्पेस होती नहीं, लेकिन मैं धीरे धीरे ट्राई करूँगा कि यहाँ का सब ये चीज़ें उठा के इधर रख लूँ। हाँ अभी भी यही किया है, सब इधर का इधर किया है कोने में थोड़ा, यहाँ पे बेड है तो यहाँ पे सब रखा है मैंने सेट करके, यहाँ पे लेकिन आपको बस यही बता रहा हूँ, वर्कआउट ये हम इन तरफ से चीज़ें बता रहा हूँ, एक्सरसाइज बता रहा हूँ, बस इतना एम में इतना मोटिव है। देख आप बस इसे देखो और करते रहो। एक बार आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि आप अपने को करना है 30, 29, 28 पुशअप्स, तो बस ये सुनकर ही वीडियो बंद करके आपको गाना वगैरह सुनना तो आप करके सुनते हुए कर लो, बस यही बताना चाह रहा था। अभी करने 21 पुशअप्स, आई थिंक अभी 2 ही सेट से 21 पुशअप्स फिर 20 पुशअप्स। ट्राई करते बेटा दादी आई थी। चलो अभी करते 21 पुशअप्स। So I think मेरे दो एक्स्ट्रा कर लिए। ये चिन टच हुआ मेरा, मुझे आदत लगानी है कि ऐसे स्ट्रेट देख के पुशअप्स करूँ, ताकि नीचे एक्चुअली जैसे कि चेस्ट और डीप चले जाए। अब ये लास्ट साइड बचा 20 का। ये टोटल कितने पुशअप हो जाएंगे, पुशअप्स हो जाएंगे आई थिंक 150 के 200 के ऊपर ही जाएंगे आई थिंक या। तो यार हम 2 सेशंस में करते थे ये 200 पुशअप्स, सुबह के और रात के, दोपहर के और रात के सेशन में मिला के, और अभी एक ही बार में कर रहे हैं। क्या प्रोग्रेस हो जाएगी गाइस धीरे धीरे, मेरी भी हो रही है आई थिंक। या मुझे पुश करना है। सर्टन टाइम्स ऐसे होगा कि मैं खुद वर्कआउट कर सकता हूँ लेकिन वीडियो नहीं बना सकता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे भरोसे भी मत रहो, आप वर्कआउट क्या करो डेली। अगर आप ऑफिस जाने वाले हो फिर भी एक टाइप से फिट रहने के लिए क्या करो, थोड़े टाइम एटलीस्ट हाफ एन आवर क्या करो, बस खुद को पसीने में भिगाओ,
बस। अगर आप फॉर एग्जांपल सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, मीन्स आपका फील्ड कोई अलग ही हो, लेकिन ट्राई करो कि फिट रहने के लिए एटलीस्ट थोड़ा बहुत क्या करो, बस करते भी रहेंगे। बहुत सारे जन आजकल करते, बहुत सारे जन। और जो एक टाइप से मेंटली फिट रहना चाह रहे, डिसिप्लिन, एथलीट वगैरह, बल्क बनाना चाह रहे, स्किनी होना चाह रहे, थोड़ा मीन्स स्किनी नहीं, फैट है तो थोड़ा फैट बर्न करना चाह रहे, तो एक टाइप से मेरा भी वीडियोस देख के आप कर सकते हो। वामोस अभी लास्ट 20 से ट्राई करते हैं। मैं भी बल्कि स्किनी ही हूँ, ऑब्वियसली मुझे भी थोड़ा सा बल्क करना है, लाइक मुझे लाइक चाहिए बॉडी एथलीट्स, लाइक फिट रहना है और कुछ नहीं मेरे माइंड में, बस फिट रहना है एक टाइप से, मीन्स मेंटली भी फिजिकली भी। लास्ट 20 पुशअप्स। का हो गया। अभी मैं भी ट्राई करूँगा रनिंग के लिए जाऊँ, एटलीस्ट हाफ एन आवर स्प्रिंट वगैरह करूँ। वाह बस ये वीडियो इधर ही क्लोज करता हूँ और 5 कर लेते हैं। ऐसे वर्कआउट हो गया सुबह का वर्कआउट तो नहीं बोल सकते, एटलीस्ट पुशअप्स इंप्रूव किया। ओके, होम वर्कआउट बेसिकली यही हो सकता है, स्क्वाट्स वगैरह भी करेंगे, बट मैं एम करूँगा कि मेंटली सुबह यही वर्कआउट करूँ, क्योंकि ये थकानी जैसा है। ऑसम, ट्राई करता हूँ रनिंग को जाओ। अभी वामोस वीडियो क्लोज कर देता हूँ। वामोस ज़्यादा बोर नहीं करूँगा भाई, मिलते दोपहर के सेशन को आज, और इसलिए मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं वर्कआउट भी नहीं कर पा रहा हूँ। और इसलिए कल रात को मैंने किया था वर्कआउट, जिसकी वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैंने वर्कआउट किया था। ओके वामोस, बाय बाय, बोर नहीं करूँगा। वामोस मैं आ गया हूँ मेरी बिल्डिंग के नीचे। ट्राई करूँगा कि यहाँ पे जगह तो है नहीं, लेकिन ट्राई करूँगा कि इधर ही भागूँ, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। ऑब्वियसली मिलता आपको कि रनिंग के बाद ही। दोस्तों अपने 275 पुशअप्स होने के बाद मैं तुरंत स्प्रिंट के लिए चला गया था। ऑब्वियसली 90 मिनट रनिंग करनी थी, लेकिन 90 मिनट रनिंग हम तो शाम को भी करते हैं, इसलिए सोचा कि 2 बार रनिंग करके कुछ फ़ायदा है नहीं मेरा, इसलिए मैंने सोचा कि 200 ये पुशअप्स होने के बाद स्प्रिंट करूं, और इसलिए मैं अपने बिल्डिंग के नीचे चला गया, जहाँ पर मैंने स्प्रिंट्स किए, बहुत तेज़ी से भागा। और आपको एक मैसेज प्रोवाइड कर रहा था कि ऑब्वियसली ये आप वर्कआउट करते हो तो ये 200 पुशअप्स ये जो मैंने की 275 पुशअप्स, ये पुशअप्स होने के बाद बस आप रनिंग के लिए चले जाओ। 90 मिनट्स 60 मिनट्स मैंने 30-35 मिनट्स स्प्रिंट्स किए, बहुत तेज़ी से मीन्स रनिंग किया मैंने, स्प्रिंट्स किए, और रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, इसलिए मैंने ये क्लिप ही ले ली थी। और बस अब ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि आज से अपनी बारी हम जीतेंगे। वामोस।